इन एवरी टाउन एंड विलेज ऑफ द वर्ल्ड चैंटिंग ऑफ माई नेम विल बी हर्ड। तो ये भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने करी थी 500 साल पहले। भविष्यवाणी जो की थी 500 साल पहले की गई थी। अब भारत में तो प्रचार था, लेकिन भारत के अलावा तो कहीं प्रचार नहीं था। और देखिए कितनी अमेजिंग बात है, चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी कब करी? 1510 के बाद। वास्को डगामा और कोलंबस ने अमेरिका और यूरोप और इंडिया का ढूंढा। तो पहले कोलंबस गए अमेरिका 1492, फिर वास्को डगामा आए इंडिया 1498। उसके पहले से पृथ्वी क्या है पता ही नहीं था लोगों को, है ना। पृथ्वी पता थी लेकिन वो अनहिडन हिडन थी पृथ्वी। फिर चैतन्य महाप्रभु ने 2010 में प्रोडिक्शन किया, जब तक पृथ्वी मिल गई थी कि अभी पूरी पृथ्वी पे प्रचार, मेरे नाम का प्रचार होगा। अब अगर आप 1965 के पहले सोचिए, अगर आप यहाँ पर हैं 1965 के पहले, आप सोचिए कि आप बोले कि सब अमेरिकन लोग भी चैंटिंग कर रहे हैं, रशियन भी चैंटिंग कर रहे हैं, तो आपको मजाक लगेगा नहीं लगेगा? आज बोले तो हाँ, मैंने बहुत सारे डिवोटीज देखे हैं, इतने सारे टेम्पल्स हैं। लेकिन 1965 के पहले आप इमेजिन करके देखिए, कोई आपको बोले कि अमेरिकन भी चैंटिंग करेंगे, रशियन भी चैंटिंग करेंगे, और लंदन वाले जो ब्रिटिशर्स आके लूट के गए वो भी चैंटिंग करेंगे। इट वॉज इमेजनरी कॉन्सेप्ट फॉर अस। तो उस समय सब जो भी और प्रभुपाद जी के जो गॉड ब्रदर्स होते थे वो बोलते थे ये शायद तो बस पृथ्वी के भगवान पृथ्वी बोले, भारतवर्ष के लिए बोल रहे। तो कोई विषय नहीं, प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था। अब प्रभुपाद जी ने अपने गॉड ब्रदर को एक बार बोला भी, एक मूर्ख इसको करके दिखाए। तो प्रभु जी अपने लिए बोल रहे थे कि मैं इसको ऐसे। तो प्रभुपाद जी ने फर्स्ट कैंटो को पहली बार इंग्लिश में, तो संस्कृत में था, ये हिंदी में थी ट्रांसलेशन, बांग्ला में। प्रभुपाद ने पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया। और ट्रांसलेट कैसे किया? वो वृंदावन में रहते थे, वृंदावन में ट्रांसलेशन करते थे, दिन में सिर्फ एक बार खाते थे, सब अपना काम खुद करते थे। फिर दिल्ली आते थे प्रिंटिंग के लिए, पैसा बचाने के लिए सिर्फ एक बार कि जाके प्रिंटिंग हो, एक ही पेज लेके आके श्री प्रभुपाद जी करके प्रिंटिंग पे जाते थे। प्रिंटिंग प्रेस दैट एसके सुधा है, और वो सरप्राइज हो गए प्रभुपाद जी की विग्रह, प्रभुपाद जी की मूर्ति को देख के कि प्रभुपाद जी इतना इतना बड़ा आंदोलन तो हो गया। क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी एक सिंपल सन्यासी जैसे जाते थे और बोलते थे कि अरे हाँ ये बुक्स प्रिंट कर दो, ये कर दो, कर दो। और फिर 1965 में 1965 में श्री प्रभुपाद जी जमदूत, और जमदूत भी कैसे, उनको वो ट्राई कर रहे थे कि कैसे मैं फॉरेन कंट्री जाऊं अपने गुरु का आदेश पूरा करूं। उस समय प्रभुपाद जी की उम्र कितनी थी? 70 वर्ष। आई थिंक यहाँ पर हमारे राजेश खन्ना जी, तो उनकी आयु, क्योंकि आपकी आयु कितनी? 70। प्रभुपाद जी 70 वर्ष के थे सब, तो हम सब तो जवान हैं। तो 70 वर्ष की एज में श्री प्रभुपाद जी अमेरिका जाने की सोच रहे हैं। सब उनको बोल रहे हैं अरे प्रभु स्वामी जी, अब वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मीट मांस मिलता है वहां पे, आप क्या खाओगे, आप तो सन्यासी हो, हमें से कुछ नहीं मिलेगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने गुरु के आदेश जरूर पूरा करो। और श्री प्रभुपाद फिर सुमति मोरारजी सुमति मोरारजी सिंधिया स्टीमशिप की मालकिन थी, उनके ऑफिस में 4 घंटे वेट उनका वेट कर। और जब वो आई तो बोली अरे आप तो मेरे पिता के समान है, मैं आपको मरने के लिए कैसे चाह। तो फिर प्रभु बोलेगा तुम मुझे पिता मानती तो मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दो, तो मुझे। तो फिर उन्होंने एक टिकट प्रभुपाद को दे दिया। और फिर प्रभुपाद के पास कितने रुपए थे जब वो शिप पे चढ़े? 40 रुपीज। उससे कुछ भी नहीं कर सकते अमेरिका। बेसिकली उनके पास कुछ पैसा नहीं था, सन्यासी। और सिर्फ उनके पास कुछ भागवतम सेट्स थे। क्या थे? श्रीमद् भागवतम सेट। एंड प्रॉपर श्रील प्रॉपर ने बोला अभी फर्स्ट कैंटो पूरा हो गया है, अभी फर्स्ट कैंटो पूरा हो गया, अभी मैं जाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ये भागवतम विल प्रीच, श्रीमद् भागवतम विल प्रीच। तो प्रॉपर श्रील भागवतम लेकर वेस्ट में गए, तो वो जदूत था, उस पर प्रॉपर जी ने बोर्ड किया जदूत को कलकत्ता से, बोर्ड करते करते आया। और पहली जन्माष्टमी कहाँ मनाई प्रभुपाद ने? बोर्ड पे। लेकिन और बहुत अच्छा, सबको खुद प्रसाद बनाया, उनका कुकर था, 3 टायर कुकर था, सबको जन्माष्टमी का प्रसाद बांटा।
करके, और फिर अगले दिन नंदोत्सव भी मनाया। नंदोत्सव श्रील प्रभुपाद जी का श्रील प्रभुपाद जी had 200 प्रॉब्लम का तीसरा हार्ट अटैक आया है तो मैं क्या, क्योंकि इट वाज फर्स्ट टाइम। एनी वन ऑफ यू ट्रैवल ऑन शिप? यस, शिप का कैसा रहता है? लॉन्ग ट्रैवल इज वेरी डिफिकल्ट, इट वाज 30 days ट्रैवल। हाँ, पर प्रभुपाद जी गए थे। समझ गए, अगर तीसरा हार्ट अटैक आ गया तो प्रभुपाद जी अभी तो हम, लेकिन भगवान कृष्ण उनको दर्शन दिया, और भगवान कृष्ण के साथ सारे अवतार उनको दर्शन दिए, और उन्होंने सपने में देखा कि भगवान पूरी बोट खींच रहे हैं। चले जाएगा, बोलते हैं डरो मत, तुम्हारी अब बोट का जिम्मेदारी मेरे पास। और अगले दिन से अटलांटिक ओशियन पैसिफिक हो गया, पैसिफाइड हो गया, शांत हो गया करके। इतना शांत हो गया, पांडे जी ने बोला प्रभा जी इतना मैंने शांत कभी नहीं देखा ओशियन, नेक्स्ट टाइम भी आप आइएगा, लौटते हुए भी आप आइए बोट में, तो जर्नी अच्छी रहेगी। और फिर प्रभा जी 30 दिन बाद बटलर पेंसिल्वेनिया पहुंचे। पहले बोस्टन पोर्ट पे पहुंचे, फिर बटलर, फिर आए वहां पर। फिर वहां से बटलर पेंसिल्वेनिया जब जाने वाले थे तो प्रभा जी को ये नहीं पता था, जब बोल रहे थे कि मैं लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, तब गोपाल अग्रवाल, उनके फादर ने प्रभा को बोला था कि मेरा बेटा आपको खोज करेगा। उस समय मोबाइल फोन वगैरह तो थे नहीं, तो प्रभा जी को पता नहीं था कोई लेने आने वाला है या नहीं लेने वाला है। बट फाइनली वो आ गया, गोपाल अग्रवाल, एंड टुक टू बटलर पेंसिल्वेनिया। 6 months Prabhupada was in Butler, Pennsylvania. He was studying the American lifestyle, कि अमेरिकन लाइफस्टाइल कैसा है उसको स्टडी कर रहे थे। और अमेरिकन लाइफस्टाइल को स्टडी करते करते श्रील प्रभुपाद फाइनली जो है न्यूयॉर्क गए 6 महीने के बाद में, क्योंकि देखा कि यहाँ पे थोड़ा क्राउड इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो न्यूयॉर्क गए। अब न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी एक योगी, जो योगा टीचर के पास रह रहे थे। तो योगा टीचर श्रील प्रभुपाद को कीर्तन तो करने देते थे, पर क्लास नहीं देने देते थे, क्योंकि उनका पर्सनल फिलॉसफी था, वैष्णव फिलॉसफी। तो प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, उन्होंने उनको एक स्टूडियो दिया जो कुछ 200-300 मीटर दूर था। प्रभुपाद वहां रहते थे, लेकिन खाना बनाने के लिए यहाँ डॉक्टर मिश्रा के स्टूडियो पे वापस आते थे करके, एंड पापा ट्रेवल करते थे। एक दिन पापा का टाइपराइटर भी चोरी हो गया। प्रभा को पता था कि वहां का जो जेनिटर है उसने चुराया है, फिर भी क्या करते क्योंकि वो अकेले थे वहां पर। और उस समय पे काफी कुछ कुछ लेडीज आ रही थी उस समय, जब प्रभुपाद टीचिंग कर रहे थे। लेकिन फिर प्रभुपाद जी को हेट एशबरी, जो हिप्पी लैंड, हिप्पीज का लैंड था, उस समय क्या हो गया था, अमेरिका में काउंटर कल्चर स्टार्ट हुआ था। काउंटर कल्चर क्या, जो यंग पीपल थे, सी अमेरिका हैज बिकम वेरी रिच बाय दैट टाइम। सो जो अमेरिकन थे, जो वेल्दी थे, उनको लग रहा था कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो वो सोचने लगे कि हम स्पिरिचुअलिटी की तलाश करते हैं। और कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तलाश करते करते ड्रग्स लेने लगे। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तलाश करते करते क्या हो गया, ड्रग्स लेने लगे। और ड्रग्स लेते लेते तो करते थे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तलाश में थे। तो प्रभुपाद जी उनके अमॉन्ग्स गए पहले, और वहां पे कीर्तन किया। वहां पे स्टोर, सबसे पहला स्टोर फ्रंट चालू किया, क्लास को आते थे लोग, और काफी लोग तो इंडियन गुरुज को भी ढूंढ रहे थे। तो उन लोगों को अपने वैष्णव शक्ति के प्रभाव से प्रभुपाद जी ने पूरा कन्वर्ट कर दिया। विपिन विपिन ब्रो, विपिन प्रभु जी को एक बार बोला था उनका थैंक्स कर। प्रभु जी 1 second, जस्ट प्रभु जी, you can donate from your hand. These plates you can offer in the altar from your hand. No problem, I can offer. So Prabhuji, you want to offer silver plates for the Lordship? Yes, yes. Hari, Hari.
Thank you very much. Give some letters. Okay. So leaving this place, I will go. So Srila Prabhupada ऐसे गए. और वहां पर क्या हुआ? हिप्पीज. तो उस समय वो पूरे ड्रग्स लेते थे. बॉय और गर्ल्स साथ में रहते थे. जैसे आप लिव इन पीजी देखते हैं वैसा कल्चर था. और स्मोकिंग ये सब तो एक नॉर्मल बात थी. प्रभुपाद जी के अमंग्स रहे. उनको पूरा क्लासेस देते थे, कीर्तन करते थे, खुद उनके लिए प्रसाद बनाते थे, खुद कुकिंग करते थे, खुद प्रसाद सर्व करते थे, और फिर वॉशिंग भी खुद ही करते थे. फिर एक दिन एक ओपिनियन वाला प्रभुपाद जी शुड आई सर्व नहीं तो यस. पर कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया. श्री प्रभुपाद लव्ड देम सो मच. पूरी होल सोसाइटी रिजेक्टेड देम. इवन पुलिस वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग. तो प्रभुपाद जी ने उनको अपनाया और वो धीरे धीरे सब लोग भक्त बन गए. कीथ, स्टीव, माइक, जैन. इवन इतना दिक्कत हुआ. डेविड सबसे पहले प्रभुपाद जी डेविड के साथ में लॉफ शेयर कर रहे थे और डेविड भक्त भी बन रहा था. एक दिन रात 12 बजे की बात है. वो पानी बिखरा देता था. प्रभुपाद जी ने कहा, तुम पानी ऐसे मत गिरो. लेकिन पानी उसने गिर स्लिप हो गया तो गिरोगे. लेकिन उसने क्या, उसने ड्रग्स ले रखी थी और वो इतना गुस्सा हो गया उस बात को लेके, क्योंकि ड्रग्स में इंसान का कंट्रोल नहीं रहता है. वो प्रभुपाद जी को मारने का दौड़ा. प्रभुपाद जी उस समय रात के 12 बजे घर से बाहर निकलते हैं. अब उन्हें नहीं पता लेफ्ट जाओ राइट जाओ. लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने माइक और जैन को कॉल किया. माइक और जैन आए और प्रभुपाद जी उनके घर में गए. अब माइक और जैन जो है वो तो लिव इन रह रहे थे. वो ऐसे नॉर्मली नहीं रह रहे थे. वो तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. उनको पता था कि स्वामी जी को ये पसंद नहीं है. लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी वहां पर रहे. अब फिर सोचा कि प्रभुपाद जी के लिए कुछ परमानेंट जगह न जाए. तो उन्होंने मैचलेस गिफ्ट शॉप 26 एवेन्यू में न्यूयॉर्क में, वो मैचलेस गिफ्ट शॉप उन्होंने ढूंढा. तो एक वो एक स्टोर फ्रंट था, उसके ऊपर एक रूम था. तो स्टोर फ्रंट में प्रोग्राम्स होता था, ऊपर स्वामी जी रहते थे. और उनको पता नहीं था रेंट कहाँ से आएगा. पर ले लिया. एक महीने का रेंट ले दिया. फिर आगे का भी रेंट आ गया और प्रोग्राम चालू हो गया और हिप्पी लोग भक्त बन गए. और फिर धीरे धीरे काफी प्रोफेसर्स अट्रैक्ट होने लगे, काफी काफी इंटेलेक्चुअल्स अट्रैक्ट होने लगे. और उसके थ्रू श्री प्रभुपाद ने मूवमेंट पूरी दुनिया में बिछा दिया. Papa traveled the globe around 20 times in 10 years. 1966, 1967, 68 to 1970. 10 बार पूरा ग्लोब किया. और हर जगह प्रीचिंग पापा जी ने किया. चाहे वो रशिया हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूरोप हो. तो यूरोप में प्रभुपाद जी ने अपने 3 डिसाइपल्स को भेजा. तो दिस माइक एंड जैन जो ऐसे रह रहे थे, बाद में उनके डिसाइपल बन गए, मुकुंद और जानकी. और बाद में मुकुंद सन्यासी भी बन गए, मुकुंद स्वामी. तो ये होता है एक शुद्ध भक्त का संग. कितना व्यक्ति आगे बढ़ जाता है. तो मुकुंद जानकी, श्याम सुंदर प्रभु है, यमुना माता जी एंड श्याम सुंदर एंड गुरुदास प्रभु एंड यमुना माता जी, श्याम सुंदर प्रभु एंड मालती माता जी. तो 3 कपल लंदन में गए. उनके पास कुछ भी पैसा नहीं. और जाके उन्होंने प्रचार किया और बीटल्स को डिवोटी बना दिया. बीटल्स को वहां पर डिवोटी बना दिया. तो ये उनका स्पिरिट था. श्री प्रभुपाद का पूरा स्पिरिट था जिसमें सब लोग भक्त पूरा बनने लगे. एंड बीटल स्टार्टर्स लंदन, ऐसा वहां पर वो था. मतलब नहीं ऑफरिंग उधर हुई. सो बीटल स्टार्टर्स लंदन. और फिर सब जगह एक एक करके सब जगह ये कृष्णा भावना में आंदोलन सब जगह फैलने लगा. और सब जगह इसका प्रचार होने लगा. और अभी इस्कॉन के 700 से ज्यादा सेंटर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड. अब बस इंडिया में काफी है. और कई जगह आप कहीं भी चले जाएं फॉरेन में आपको इस्कॉन टेम्पल दिख जाएगा. इवन मोदी जी जब रशिया गए थे तो काफी इम्प्रेस हो गए थे वहां के इस्कॉन टेम्पल्स और रशियन डिवोटीज को देखकर कैसे हो रहा है.
तो ये श्रील प्रभुपाद जी का इतना स्ट्रगल है, इतना सब परेशानी प्रभुपाद जी ने दिया, इसलिए वो हमारा क्वालिफिकेशन है कि हम आज यहाँ पर। तो दूसरा प्रिडिक्शन है, तो कई सारे प्रिडिक्शन श्रील प्रभुपाद जी के बारे में हुए। अब दूसरा प्रिडिक्शन है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कृष्ण जन्मखंड में। उसमें गंगा देवी भगवान श्री कृष्ण जा रहे होते हैं पृथ्वी छोड़कर, तो गंगा देवी भगवान श्री कृष्ण के पास आती है मगरमच्छ पे और बोलती है, भगवान आप तो जा रहे हो, ओ लॉर्ड बेस्ट ऑफ लवर्स, नाउ दैट यू आर गोइंग टू गो टू सुप्रीम अबाउट गोलोका, व्हाट विल बी आवर सिचुएशन हियर इन दिस एज ऑफ कलियुग? The Supreme Personality of Godhead said, sinful people will come to you and upon bathing will give you their sins. You must remain like this on earth for 5,000 years of the age of Kali. ये सारे जो है सिंफुल लोग आएंगे और 5,000 साल तक आप में, क्योंकि देखो सब इतने पापी लोग नदी में स्नान करते हैं, नदी जो गंगा देवी है उनको भी तो उसका पाप धोना पड़ता है, नहीं धोना पड़ता है। तो बोले कि 5,000 साल तक तुम धो, फिर क्या होगा? मन मत मंत्रोपासक स्पर्शात भस्मी भूतानि तस्नात् भविष्यन्ति दर्शनाचा स्नाना देवी जानवी। और गंगा then there will be many devotees worshipping me by my mantra, and merely by their touch, glance, and breathing all those sins will be immediately। बाकी सारे जो होंगे जो मेरे मन वापस में जो मेरा नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये भक्त लोग जो संकीर्तन करेंगे तुम्हारे सारे पाप चले करके। तो ये इसमें प्रेडिक्शन था। और ऐसा कब हुआ? श्री प्रभुपाद जी का बर्थ, तो ये भगवान के जाने के 5,000 साल कौन से साल में हुए? 1896 में, सॉरी 1898 में। प्रभुपाद जी का जन्म हुआ 1896 में। तो ये दूसरा प्रेडिक्शन था श्री प्रभुपाद के बारे में। फिर तीसरा प्रेडिक्शन चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर करते हैं, पृथ्वी पर्यंत यथा आचे देशग्राम सर्वत्र संचार होएगा मोरे नाम। In every town and village of the world, the chanting of my name will be heard। कि सारे टाउन और विलेज में क्या होगा? तो चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले ये प्रेडिक्शन किया था। और नित्यानंद प्रभु ने बोला था कि एका मोरा, एका नाम संकीर्तन तिस्सा खड्ग लाए, अंतर असुर जीवन फैली बे कटी है, यदि पापी झाड़ी धर्म दूरा दिक्षयाए, मोरा सेनापति भक्त यावे तक है। Taking the sharp sword of the congregation chanting of the holy name, I will root out and destroy the demonic mentality in the hearts of the conditioned souls. If some sinful people escape and giving up religious principles go to far off countries, then my commander-in-chief, Senapati Bhakta, will appear to chase them and distribute Krishna consciousness। चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार कहाँ पे किया? भारतवर्ष में। और भारतवर्ष के आगे प्रचार किसने किया? श्रील प्रभुपाद। तब चैतन्य नित्यानंद ने बोला था, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि मेरा संकीर्तन सब जगह फैलेगा, और जो लोग बाहर देशों में चले गए उनको मेरा सेनापति भक्त आएगा और सबको भक्त बनाएगा। और कौन आया? शिला करके। तो ये 14 प्रेडिक्शन था श्रील प्रभुपाद के बारे में। फिर पांचवा प्रेडिक्शन 1885 में भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रेडिक्शन किया था। 1896 में श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रेडिक्शन किया था कि श्रील प्रभुपाद आएंगे, कि जो अभी सेनापति भक्त है जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था उसका जन्म हो गया। और 1885 में भी बोला था, लॉर्ड चैतन्य डिड नॉट इन्वेंट हिमसेल्फ टू लिबरेट ओनली अ फ्यू मैन इन इंडिया, rather his main objective was to emancipate all living entities of all countries through the entire universe and reach eternal nature। There is no doubt that this unquestionable order will come to pass very soon। The unparalleled path of Harinam Sankirtan will be propagated all over the world। Oh, for that day when the fortunate English, French, Russian, German, American people will take up banners, mridangas, and kartals and lay Kirtan through their streets and towns। तो एक समय आएगा जब रशियन, जर्मन, फ्रेंच सब एक साथ आएंगे और बोलेंगे जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। और अगर आप मायापुर जाते हैं तो मायापुर में आप सारे नेशनैलिटीज को देख सकते हैं। इनफैक्ट इस्कॉन ने इस्कॉन के 50th ईयर पे
श्री प्रभुपाद गोइंग टू यूएस के 50th ईयर पे कोलकाता में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। तो उसमें रिकॉर्ड ब्रेक हो गया कि 126 कंट्रीज और 190 कंट्रीज के डिवोटीज एक साथ आए। इतना कभी रिकॉर्ड ब्रेक नहीं था। एंड श्री प्रभुपाद जी का मूड क्या था जब वो पहली बार 10 सितंबर को, आज क्या है 10 सितंबर है, 10 सितंबर को ये लिखा था। टुडे द शिप इज फ्लाइंग वेरी, प्रभुपाद जी 17 सितंबर को पहुंचे थे और 10 सितंबर को ये लिखा था। टुडे द शिप इज फ्लाइंग वेरी स्मूथली, आई फील टुडे बेटर, but I'm feeling separation from Sri Vrindavan and my Lord Sri Govinda Gopinath Radha Damodar. The only solace is Sri Chaitanya Charitamrita, in which I am tasting the nectarine of Lord Chaitanya's Leela. I have left Bharat Bhumi just to execute the order of Sri Bhaktivedanta Saraswati in pursuance of Lord Chaitanya's order. I have no qualification, but have taken up the risk just to carry out the order of His divine grace. I depend fully on their mercy, so far away from Vrindavan. So no qualification. क्या प्रॉब्लम का? I'm feeling so much separation from Vrindavan. Then 65 Srila Prabhupada arrived, and when he arrived, he wrote again another poem, seeing the whole Boston Harbor, seeing the whole US civilization, he wrote another prayer. My dear Lord Krishna, you are so kind upon this useless soul, but I do not know why you have brought me here. प्रभात अकेले, कोई नहीं है। सोचो 70 साल की उम्र है, कुछ पैसा नहीं है, अकेले अमेरिका में। अगर आप यूएस में जाते हो तो पहले आपका सिक्योरिटी होता है ना, आप कहाँ जा रहे हो, पहले वीजा, आपको अपने अकाउंट में बहुत पैसा दिखाना होता है तब तो वीजा मिलता है। उस समय ऐसा नहीं था। तो बट आई गेस यू हैव सम बिजनेस हियर, अदरवाइज व्हाई वुड यू ब्रिंग मी टू दिस टेरिबल प्लेस। सी उस समय इंडियन बहुत वो थे कि भाई अमेरिका जाएंगे, प्रभाव को प्लेस कैसा लग रहा है, टेरिबल प्लेस, क्योंकि वहां पे कोई विष्णु मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, तो टेरिबल प्लेस, कोई धाम नहीं है, सब मेटलिज्म में लगे हुए, तो एक सन्यासी के लिए तो वो टेरिबल प्लेस। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हियर इज कवर्ड बाय द मेटल मोड्स ऑफ इग्नोरेंस पैशन। ऑफ कोर्स आज का बैंगलोर और 65 का यूएस में कोई फर्क नहीं। अब आज का यूएस एंड बैंगलोर में भी ज्यादा फर्क नहीं है, ड्यूटीज बताते हैं। आई थिंक प्रभु जी कैन टेल बेटर कि यहाँ पे ग्रीन ग्रीन लेआउट और इतना जैसा कल्चर आ गया है। मैं एसीएस लेआउट में गया था, वहाँ व्हाइट फील्ड सेंटर एक बार गया तो बता रहे कि हमारे ब्रह्मचारी रहते हैं और ऐसा एटमॉस्फेयर है कि हमें लगता है हमें ब्रह्मचारी आश्रम दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। तो मैंने बोला कि अभी बाबा यूएस और यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं रह गया है, जैसा कल्चर, पब, ये सब जो कल्चर है, नाइट कल्चर, सब पूरा भी इंडिया में भी आ गया है। तो प्रॉपर जी 1965 में इंडिया बहुत सात्विक था उस समय। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हियर इज कवर्ड बाय द मेटल मोड्स ऑफ इग्नोरेंस एंड टेंशन, absorbed in material life to think themselves very happy and satisfied, and therefore they have no taste for the transcendental message of Vasudev Krishna. I do not know how they will be able to understand it, but I know that your causeless mercy can make everything possible because you're most expert mystic. How will they understand the manners of devotion service? Oh Lord, I'm simply praying for your mercy so that I will be able to convince them about your message. So all living entities have come under the control of the illusory energy by your will. And therefore, if you like, by your will, they can also be released from the clutches of illusion. कि भगवान माया में तो आपने डाला है, आप ही माया को हटा सकते हो। I wish you deliver them. If you so desire, कि भागवतों को समझना आसान है भगवान, अगर आप उनको बुद्धि दोगे तो ये आपका जो मैसेज है भागवतम में ये लोग समझेंगे। मैं उनको कैसे समझाऊंगा कि सेंस ग्रेटिफिकेशन मत करो, भगवान की पूजा करो, इतना मुश्किल है उनको समझाना, लेकिन आप बुद्धि दोगे भगवान तो हो पाएगा। God is so dependent on Krishna. I am very unfortunate, unqualified, and most fallen. Therefore, I am seeking your benediction so that I can convince them, for I am powerless to do so on my own. Even today, to make one American devotee is not easy.
You can make a lot of Indians in America devotees. But you go and take one American body person and make him a devotee is not easy, even today. So what Prabhupada did was a miracle. Somehow or other, oh Lord, you have brought me here to speak about you. Now, my Lord, it is up to you to make me a success or failure as you like. For spiritual master of all the worlds, I can simply repeat your message. So if you like, you can make my power of speaking suitable for their understanding. Only by your causeless mercy will my words become pure. I'm sure that when this transcendental message penetrates their hearts, they will certainly feel glad and thus become liberated from all unhappy conditions of life. Oh Lord, I'm just like a puppet in your hand. If you have brought me here, let make me dance, make me dance. So this is the mood of preaching. हम दूसरों को प्रचार करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम बहुत बड़े या हम करेंगे ये भगवान हमारे थ्रू कर रहे हैं हम तो सिर्फ एक पपेट है भगवान बुला रहे हैं बोल रहे हैं I have no devotion, nor do I have any knowledge, but I have strong faith in the holy name of Krishna. I've been designated as Bhaktivedanta, and now if you like, you can fulfill the real purport of Bhaktivedanta. Shri Prabhupada. It's so heart touching. So there's a full proper Leela Amrit black book is also there. I think 100, 150 rupees that book, property ka pura page is there. Can show that book. If anyone want, you can purchase that book and they can read it. It's very nicely. So Sri Prabhupada ji ka pura life दिया हुआ है Sri Prabhupada, the messenger of the Supreme God. तो हम देख सकते हैं, especially भक्ति विजय भागवत महाराज was there in Shishadipuram. मुझे बोला कि मैं भक्ति विजय भागवत महाराज आए थे, one Sunday, on Saturday he came. So he told कि inspired devotees to take भागवत set. तो श्री प्रभुपाद केवल भागवतम लेकर गए थे. तो आज आप श्री प्रभुपाद को ऑफरिंग देना चाहते हैं तो आप भागवतम सेट का ऑफरिंग दे सकते हैं कि हम अपने घर में एक श्रीमद् भागवतम सेट लेकर आएंगे और किसी को ज्यादा इंक्वायरी है तो वो तरुण प्रभु को कांटेक्ट कर सकते हैं. तरुण प्रभु और भागवतम सेट के बारे में आपको बताएंगे, उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस और सब कुछ. तो ये जो है हमारी इतनी कृपा है. तो आगे का जो प्रोग्राम है हम डिवोटी से अनुरोध करेंगे अपना ऑफरिंग्स देने को. विपिन मेरे प्रश्न विपिन मेरी विदेश प्रभु विल कोऑर्डिनेट. Prem will coordinate or Prem will give the first offering. So Vipin will coordinate. So we'll have offerings for 15-20 minutes. Then we'll have Srila Prabhupada Guru Puja. An offering flowers, Pushpanjali to Srila Prabhupada. And then we'll have nice Krishnas. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Now we'll have offering to Srila Prabhupada by different devotees. One by one, there's a couple of devotees for 2 minutes each. Pray through. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gauravani Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram. Thank you, Prabhu, for raising us. Sorry for also opportunity to make this offering is Sri Prabhupada. Actually, this is my first time to make this offering for God. But I've been 20 years in an association of devotees. I never felt that actually progress because of my own shortcomings. So please pardon my differences. So, Sri Prabhupada, I would like to thank you for being my beloved spiritual father in this material life.
as a parent or as a father who always have expectations for the children. And Hare, Hare Krishna. So as a father normally has expectation from his children, I'm sure you also have expectations of us from all us, all of us as a spiritual father to be able to take the message of God to the rest of the world. Despite being 20 years in this moment, I have not progressed, but I really am thankful for your teachings and to leave behind those teachings through our spiritual brothers and sisters constantly take care of me and protect me, to teach me, give me the association on a day in and day out basis. And I'm very thankful for you to continue to inspire my family, my loved ones, to be in Krishna consciousness. I don't know where you would have been if not for your, your preachings, the fact that we have so many temples to be able to go to and know about God, to associate with devotees. So thank you, my Srila Prabhupada, for your continued guidance through seniors, Vaishnavas. I hope that one day I will be able to meet your expected level of spiritual progress and take your message to the rest of the world. Hare Krishna. Thank you. Srila Prabhupada ki Jai. ओम विष्णुपादाय कृष्ण विष्णु भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे Dear Srila Prabhupada, actually, so just recently I was meditating on some of your glories, that how in this world hardly any person is looking after service to any other person. And indirectly or directly we are trying for that only, but hardly we know about that fact that we are looking for service to somebody, someone else actually. So when we see your life, that how you have transformed so many people, when you go to Mayapur or when we go to Vrindavan, many of the times every person who comes there have an experience that how there are so many devotees all over the world and all over the continents, and even there is hardly any continent left. Even in Antarctica also recently some devotees went and they established Gita, and they gave Gita to the scientists, those who are doing some researches there. So there is hardly any continent left where there are no devotees or where there is no message of Krishna consciousness. So it is your miracle actually that to make a one person selfless in his attitude takes lot of purity. And when we see so many devotees all over the world coming together at one place like Mayapur and Vrindavan, and in material terms, they are primitive places. They are not very advanced, not so furnished and all, opulent and all. But when we see the devotees coming from all over the world, leaving all the opulences, comforts and all, just for a single purpose of serving the Lord. So with a selfless attitude also, without any material motive. Generally in India, when we see that any person goes to temple, his motive is भगवान आज ये दे दो, भगवान आज वो दे दो, भगवान आज ये कर दो, भगवान आज मेरे बच्चे का ये हो गया, वो हो गया. So many motives person carries. Even when we go for exam, there was an attitude that आज ये पास कर देना, आज इस टीचर का छुट्टी लगा देना. So many ulterior motives we had, but when we come in Mayapur, everyone is single focus and a selfless attitude. They want to serve Krishna without any material gain. So that takes a lot of purity, and I am getting some glimpses in my services that how it takes too much of purity at the same time, so much of uh, efforts to just create purity for ourselves and create purity in others. It takes a lot actually. So I'm just contemplating on how this is
very much of your high spiritual potency and purity that you made the whole world, and through your purpose, through your lectures, through your own lifestyle, you have made the whole world in a place where all the people of this world can come together with a selfless attitude, and they can promote and preach the message of Krishna consciousness. So, Hare Krishna. Thank you. नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय पुत्रे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारणे त्रिविशेषवाणी भाषादेशधारणे. Dear Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances. Last year, Maya shifted to ISKCON Sujapur Road, and that marked a new beginning for me. By your mercy and devotees' mercy, I was fortunate to spend most of my weekends and sometimes weekdays in Harinam Sankirtan programs and book distribution, having no time to think much about my problems in life. I got a lot of reciprocation from you and DTs as well as from devotees. This year, I got a lot of responsibilities and services, which I tried to do as much as possible. When I first come to Surjapur, I took the service of DT department and flower department for some time, along with helping in book distribution and Harinam Sankirtan. Then I left TT department, took to book distribution Harinam fully, trying to take devotees also. This was very ecstatic experience. I also went to many camps like Udupi, Tiruvananthapuram, Srirangam, Melkote, Vrindavan, Srirangapatnam, etc. with devotees. I am very grateful to you and your grand disciples who are fully dedicated to preaching the message of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and are guiding us in every step of life. Also, I am very grateful to the association of devotees which I have got by your merciful endeavor to spread Krishna consciousness. Also, I am very happy to get shelter from your disciple and thus get connected to Guru Parampara. After getting connected to my spiritual master, I will only carry his order in my heart and fully surrender to those orders. I will try to follow him. I'm still struggling to control my senses and mind, and sometimes I slip because of my program Bhakti. I try to rise again. Please bless me so that I do not slip in my journey ahead. Please help me to join fully. It's very difficult to join, and so many demands of money, etc. So please help me so that I can fully dedicate myself to your mission. Your insignificant servant. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharani Nirvishesh. Many years ago, I was many years ago, I was reading one book by one of the disciples of Prabhupada. But the book is written by a devotee named Mool Prakriti Mataji. And that book basically describes the life of Prabhupada before Prabhupada went to the West and started ISKCON. So in that there was one pastime which really come to my mind every now and then, and I meditate. So there was one young boy. He used to come to Prabhupada for delivering milk, and he would ask Prabhupada to if he can do some service to Prabhupada, clean his room, some small services. But Prabhupada never allowed him to do anything. One day, after many days, he asked. Then Prabhupada said, "Okay, clean the room." So he went inside. 15-20 minutes, cleaned the room, came out, and then Prabhupada went inside. So suddenly Prabhupada came out and he became very angry at that person. His face was red and he was fuming with anger. He said, "What have you done?" Person was, he was little taken aback. I didn't do anything wrong. So then Prabhupada asked, "There was a spider here. Where is it now?" And he said, "No, there was a spider web. I cleaned it up." So he said, "No, see, we have come from outside and that spider has taken birth here. It is his home and I am an outsider. How can you take the spider out of this place?" So I was just thinking that, like Krishna says, Advishta Sarva Bhutana Maitra Karuna Evacha.
So Prabhupada was living the Bhagavad Gita, and he was the living example of Bhagavad Gita. How for every living entity, like even a spider, consider friend and see it with full compassion. So I'm very grateful to be connected to Prabhupada and ISKCON. And I mean, Prabhupada never, he was already perfect. He didn't have anything to gain by going to the United States, preaching to people, taking so much trouble. He was always perfect. He had already attained perfection. So the only reason he went out of Vrindavan to give the message to others was only his compassion. So I just pray to Prabhupada that I make use of my life, and as he has shown by chanting, by reading his books, and by doing some service which is given to me. I'm really grateful to Prabhupada for all that he has done, all the amazing things. Thank you. Hare Krishna. Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Srila Srimad Bhaktivedanta Swami. So I was just meditating on some of my experiences from last year, how Prabhupada, helped me through my progress in Bhakti. So I was thinking, so last year I shifted to Bangalore and I was staying in this yoga with all these devotees. And I was just wondering, so Bangalore being the IT hub of India, there are devotees from various places, north, northeast, south, multiple languages, people of various skills, backgrounds, castes, etc. But I was thinking that none of us have any conflicts, although we have different mindsets, etc. We all just stay like friends and brothers. Although staying for a year in this atmosphere, it may seem now like very usual. I don't think if we go outside anywhere, people of many people like this staying together could be even possible. So I was thinking this is only possible because of the very nice, pure and authentic process that Prabhupada gave to us in a very simple way. It is comparatively very simple to many other yogic process that we see. And with detailed instructions and very nice books where he explained things, all the scriptures very well, that he gave this process. And only because of that, although people are from various backgrounds, etc., they are just like friends and brothers here. And suffering multiple heart attacks, going when not having any money in that old age, and even getting robbed, going through murder attempts. Why would anyone go through all of this for preaching something that is transcendental to all of us, unless he's like very, very compassionate? So I was just feeling very grateful to Prabhupada that, because of him, we are all here and, in this atmosphere where we are just like friends and brothers, although we are from different families. Thank you, Srila Prabhupada. Hare Krishna. So, thank you very much, Srila Prabhupada, for all your endeavors and whatever you have given. Srila Prabhupada in 1922 met his special master, Srila Bhaktisiddhanta Thakur, and we are very grateful to Srila Bhaktisiddhanta Thakur that he gave that instruction to Prabhupada in the first meeting, because of which we all are here. In 1933, Srila Prabhupada got actually initiation from Bhaktisiddhanta Thakur, and in 1944, Srila Prabhupada single-handedly started the Back to World magazine, which includes the writing, editing, printing, and distributing all alone. And in 1955, as Prabhuji mentioned, Srila Prabhupada left his home to build a home for all of us where we can live. So Prabhupada once mentioned that I build a home in which the entire world can live. So ISKCON is that home where each and every person can be accommodated regardless of his caste, creed, color, whatever background he comes from. That is the power of the chanting of the holy names. Generally in India also there's certain traditions which go on that, okay, only if you're born in a Brahmin caste or if you're born in a higher caste, then only you can enter the temples or worship the deities. But thanks to Prabhupada and thanks to Chaitanya Mahaprabhu, that is not actually correct, because we know that what is the power of the holy name that was demonstrated by His Divine Grace, E.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. And in 1966, he actually started the ISKCON movement. And how did it actually go about? We understand that he just went and started chanting the holy names in one of the parks, and we know
how by Prabhupada's pure chanting, we have seen that video how the hippies also are dancing, and Prabhupada is so happy to see the mission of Srila Mahaprabhu coming true, right? And in 19, like even after Prabhupada, just tell one pastime which is not generally heard. I heard this from one of the Prabhupada disciples. Actually, how much Prabhupada tolerated his the devotees. In the West, generally, people don't know anything about the culture, at least those days when Srila Prabhupada went. So when Prabhupada had a yajna kund for the initiation ceremony, so Prabhupada told them to bring the bricks, and then he told them to bring the fruits. So then they actually put the fruits all around the yajna, and then Prabhupada was about to start the yajna, and devotees were hungry. So what they thought is, okay, like we're actually hungry anyway. Yajna kund is actually Vishnu. So then they actually took the fruits and they ate it because they were hungry. Then Prabhupada said, "Arey, this is not offered. You should not take it like that." And then Prabhupada had a Bengali accent, English. So once what happened, when the yajna was going on, he was actually chanting the mantras, then Prabhupada said, "Bow down." So I said, "Bow down." So then, but what did they hear? The Western disciples, they heard it's blow down. So they actually started blowing down the entire yajna, which was, there's a fire in the yajna, and they blew down the entire yajna. And Prabhupada was like, what are you doing? You don't understand. Then he said, bow down, P-O-W, bow down. Then he said, okay, bow down. Then actually bow down. So Prabhupada's actually, many of these things, when they, like nowadays, when we get the aarti, as Indians, we know, okay, we have to take. But when initially Prabhupada started this, told what we should do with the aarti. They don't know anything. From the scratch, Prabhupada taught them everything. So that is Prabhupada's grace, that one person, how much change he can make in the hearts of so many people. And even now we can see in every part of the world, we have ISKCON devotees, and this practically we can see change in our own hearts. So we're very grateful to Srila Prabhupada for establishing a home in which the whole world can reside. Thank you. So now we'll have a Pushpanjali, a flower offering by to Srila Prabhupada. So the one side of the for Srila Prabhupada. So this Moses. I was wandering towards the hell. Somehow his divine grace gave me the Chaitanya realm. From the uncultured life full of sin, Prabhupada explained the real grin. Ignorantly thinking self to be perfect, there was no destination. But devotees told the path of perfection. Oh Prabhupada, why you struggled so hard in America and the cracking cold? Your greatness quite old. Though are many ways for temporary satisfaction, but cutting null 0 and 1, you purported permanent devotion. When could I serve and preach old, absorbing in Bhagavatam and sparing the words of gold? As Bhagavatam says, not to be a hog, please bless me to be a dog. Hare Krishna. So now we'll all stand up. So all Matajis can come this side, Prabhujis can come this side, facing Srila Prabhupada. So we'll chant the Pushpanjali mantras, prayers, and then we'll offer the flowers to Srila Prabhupada. So when I will say Pushpanjali, first I will read prayers for 5-10 minutes, then we'll have the Pushpanjali, then you will take 3 times near to the Pushpanjali. So whatever flowers you're getting, offer it 3 times, and then come and offer it to the Prabhupada. Now we can go, yoga we can offer the and this table, we can offer